Hello and welcome to the Correspondent with another episode of our podcast series. आज मैं और आयशा गुफ्तगू करेंगे on yes sad news. The Queen is dead and the world is mourning. पाकिस्तानी के भी बहुत सारे जो वोक लोग हैं वो अपने ट्विटर पे अपने इंस्टाग्राम पे क्वीन की तस्वीर शेयर कर रहे हैं, एक सैड मैसेजेस कर रहे हैं. बहुत सारे लोग कह रहे हैं द क्वीन इज डेड बट लॉन्ग लिव द क्वीन. आई डोंट नो उनकी अंग्रेजी का मसला है ये क्या है, बट दुनिया के बहुत सारे इलाकों से बहुत सारे शहरी, बहुत सारे मुल्क जो हैं उनका रद्द अमल क्वीन के ऊपर जरा मुख्तलिफ है. और क्यों ना हो, क्योंकि द क्वीन मे बी डेड बट द मोनार्की विच शी रिप्रेजेंट्स वो चलती आ रही है. क्वीन की डेथ के बाद लगभग कोई $89 मिलियन की उनकी जायदाद है. शी लेफ्ट बिहाइंड दिस बिग क्राउन जिसके अंदर कोहिनूर लगा हुआ है, और शी ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड बिग पैलेसेस जो कि उनकी जो पुरानी कॉलोनीज थी उनके पैसों से है. तो क्यों नहीं गम और गुस्से का इजहार किया जाए? क्यों ना वो लोग जो सब कॉन्टिनेंट से हैं, जो अफ्रीका से हैं, जो कैरेबियन से हैं, वो गम और गुस्से का इजहार करें, या वो इनडिफरेंट हो, या वो सैडनेस का इजहार ना करें. बिकॉज उनके ऊपर, उनकी बाप दादाओं के ऊपर, उनके सारे जो पिछली जनरेशंस हैं उनके ऊपर जुल्म हुआ है. तो आज आयशा, we're going to talk about the Queen. Exactly. Are you And sad? I think, So the first question. अच्छा. Are you sad or are you one of those people जिन्होंने ट्विटर पे लिखा कि long live the Queen, Queen Elizabeth is dead? Well, I'm none of these. I'm not sad और ना ही मैंने ट्विटर के ऊपर कुछ लिखा. आप indifferent थी. But I'm indifferent because I don't feel anything for the Queen. ना उसके लिए कोई इतना खास मोहब्बत का इजहार है, ना कोई इतनी ज्यादा नफरत है for the monarchy. Obviously, there is a certain level of sentiment being part of that एरिया जो कि एक वक्त पे कॉलोनाइज था और जिसके असरात, उस कॉलोनाइजेशन के असरात हम लोग आज तक सफर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर. सो देयर वाज अ सेंस के इट डजंट मैटर. आई मीन पीपल डाई ऑल द टाइम. सो शी डाइड, व्हाट्स द बिग डिफरेंस? शी वाज old obviously, and but obviously जैसे आपने कहा कि monarchy lives on, ठीक है, तो जिस चीज को वो रिप्रेजेंट करती है, जिस ऑपरेशन को, जिस वायलेंस को, ये सिंबॉलिक, जो कि बिकॉज मोनार्की तो सिंबॉलिक है, इट डजंट प्ले एनी रोल इन द पार्लियामेंट या डिसीजन मेकिंग के अंदर उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी मोनार्की, दैट आई थिंक, दैट आई बिलीव इज ऑपरेशन, वायलेंस, रेसिज्म एंड जो एथनिक, रिलीजियस और डिफरेंसेस या कह लें क्लैशेस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एंड इवन आई बिलीव इन अफ्रीकन कॉलोनीज जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे वर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ colonization because I believe उससे पहले उनके अपने अपने traditions थे, people were coexisting peacefully, but Britishers came, they wanted to make people civilized because according to them people here were not civilized. That affected locals. That affected locals, that changed the mindset of locals, and that changed the way people used to think. ठीक है. अच्छा, उससे पहले हम उनकी पास की जुल्म के ऊपर जाएं. मतलब you know they've done their good point on in the subcontinent, जिसके हम भी I'm so sure one way or the other जुल्म और सितम के शिकार होंगे, बिकॉज हमारी जो जनरेशंस होंगी. रिसेंट पास्ट के अंदर कैरेबियन के कुछ 7 ममालिक हैं जिन्होंने क्वीन, क्वीन जो थी जब व्हेन शी टुक द रेन्स तो 1952 के अंदर मेरे ख्याल से, तो उन्होंने तकरीबन 35 कंट्रीज जो थी ऐसी आउटसाइड द यूके, उसकी वो स्टेट और हेड ऑफ द स्टेट थी. और अभी मेरे ख्याल से 14 या 15 ममालिक की हेड ऑफ द स्टेट थी. अभी रिसेंटली 2021 के अंदर मेरे ख्याल से पिछले साल गालिबन कैरेबियन के 7 ममालिक ने इसके ऊपर एक एक कैंपेन चलाई कि क्वीन शुड नॉट बी द हेड ऑफ द स्टेट एनीमोर. इनफैक्ट 2021 में बारबाडोस जो था मुल्क, उसने क्वीन को एज हेड ऑफ द स्टेट रिमूव कर दिया था. सो इट फाइनली बिकेम अ रिपब्लिक. इसी तरह नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरिश पीपल जो यूके का हिस्सा रहा है, दे डोंट लाइक द क्वीन. इसी तरह अभी हमने 2022 में देखा कि ऑस्ट्रेलियन सेनेटर थी जिन्होंने ओथ लेना था, और उसके अंदर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी क्वीन की अभी भी कॉमनवेल्थ में आती है, क्वीन वाज स्टिल द हेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो और उनके जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है उसके अंदर उनको होता है क्वीन के ऊपर प्लेज करना होता है. तो उसने
क्वीन को colonizer queen कहा, although Yes, she had to correct she did. her Oath. लेकिन उसने उसको colonizer queen कहा, Lydia Thorpe, if I'm not wrong, Yes, वो yes, उनका yes, नाम I था. remember. और because now why did Lydia Thorpe recorded her protest against the colonizer queen, क्योंकि she was the local natives. और आपको पता होगा कि जब during the colonization जो पूरा इनका project होता है उसके अंदर जो natives होते हैं उनकी ethnic cleansing करते हैं, genocide yes. बिल्कुल. Queen Elizabeth's monarchy has sponsored and overlooked genocide. और हम उसके बारे में बात करेंगे, but you had something to say about the subcontinent, and we read the book Shashi Tharoor की एक बहुत मशहूर किताब थी Inglorious Empire, and he has done a very good work on He has done very how good research UK about yes. how things were before Britishers came, during their colonization, during their rule, and after they left. After they left. So I think अच्छा यहाँ पे एक point mention कर देना बहुत जरूरी है कि we are blaming the monarchy for everything that they've done, but we're not including the Britishers themselves, the British government, the British parliamentarians, because as we'll discuss in this podcast further as well, कि क्या क्या हुआ था. तो not only the monarchy, obviously they were the head of the state and they were overlooking it, and उनकी permission या उसके अलावा नहीं हो सकता था. But even at that time there was a parliament, there was a government, there was democracy in the UK. So उस time पे उनकी government was equally responsible for all the atrocities and violence that took place. So I would like to register my protest for the British government as well. So starting on, अगर हम subcontinent की बात करें, which is now Pakistan and India and so many other countries, Bangladesh and further. So इस area के अंदर when the East India Company came for a trade apparently, and then they took over the reins. In 16th century, I believe. Yeah, so the GDP of the world's GDP that India, ये subcontinent कह लो, that contributed to the world's GDP, that was 23%. So India's share of global economy was 23%. 23%, okay. which I believe is huge. Yeah. ठीक है, considering that when at the time the Britishers left subcontinent, it was after 200 years. Yes, it was less than 4%. So it is an alarming situation that you invade a country, you come to a place saying कि हम तो यहाँ के हालात सुधारने आए हैं, they are uncivilized people. How can somebody who is uncivilized contribute so much to the economy of the world? Yes. And then you come claiming कि हम तो इनको सुधारने आए हैं, हम इनको और industrialize करने आए हैं, हम इनको सहूलतें देने आए हैं, and when you leave, it's so much worse. It's so much worse, exactly. So जो ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, because 18th century के अंदर they went through industrialization. So it was primarily sponsored by deindustrialization of subcontinent. Yes, क्योंकि exactly. again जैसे Shashi Tharoor in his famous speech, आप कुछ बता रही थी? नहीं, so what happened was जो जैसे आपने बात की कि deindustrialization of the subcontinent. So उनकी industrialization इस तरह से होती थी कि all the equipment, all the raw material that was being created in India, और उसके बाद जो चीजें बन रही थी इंडिया में, so they stopped that. वहां से यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाने लगे वो ब्रिटेन में, वहां पे जाके अपनी इंडस्ट्री को दिया बूस्ट, वहां पे जाके चीजें क्रिएट की, एंड देन दे एक्सपोर्टेड इट इवन into India, back into to India. subcontinent. So, subcontinent जो था, जो finished products को export किया करता था, वो importer बन गया. वो importer बन गया. ठीक है. Which which directly. So हम ना सिर्फ उनको sponsor कर रहे थे through raw materials, and we were also the biggest buying market for them. So हम cost भी pay कर रहे थे, price भी हम pay कर रहे थे. And they were the best. ठीक है. So they were just getting the money out of it. And monarchy was the biggest beneficiary of this entire thing. ठीक है. और So इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, so ये तो एक फाइनेंशियल चीज हो गई सी कि उन्होंने हमारे रॉ मटेरियल, हमारे एसेट्स को यूज किया, एक्सप्लॉइट किया. बट इसके साथ ही साथ बिकॉज दे वर द रूलिंग अथॉरिटीज, what they did was they gave all the important businesses. So okay, one, they were taking all our materials and money and everything. Secondly, it was a place जहाँ पे Britishers के जो पढ़े लिखे लोग होते थे, जिनके सिविल सर्वेंट्स होते थे, उनको जॉब्स देने के लिए भी इंडिया लाया जाता था, सबकॉन्टिनेंट लाया जाता था, और यहाँ पे लाके हाई प्लेसेस में ऑन अ वेरी हाई सैलरी, जो कि यहाँ के टैक्स पेयर्स के पैसों से उनको दी जाती थी. नंबर 3,
यहाँ के लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी. Winston Churchill himself, quote unquote, said, "I hate Indians." ठीक है. They used Indian personnel in World War One and World War Two. World War One के अंदर I think it was around 1.3 million personnel was used, and in World War Two almost 2.5 million. यानी 13 लाख और then 25 लाख Indians जो थे, they contributed as troops for the Britishers, and yes. I believe that they were not paid. They were not paid, exactly. 1.5 billion pounds, not dollars, pounds, which is even more money. It was owed in the Second World War. 1.5 billion pounds देने चाहिए थे, reparations थी या उनकी salaries के लिए जो कि उन्होंने serve किया था, उसके अंदर उनको देने थे, लेकिन not a single penny was paid. ठीक है. और याद रहे कि इसके साथ साथ 15 से 15 to 30 million people died of famine during their rule, and 30 million in specific Bengal का जो all famous famine था. Famine है, 4 million people died in 4 million people died in that, and because it was during the World War. Yes. और उन्होंने जो because wheat नहीं था और उन्होंने wheat को store कर लिया था for their own troops. For the Goras. For the Goras, yes. Again, you know, Again, हम लोग political correctness के पीछे इन्हीं Goras को आज celebrate कर रहे हैं. The problem is that 200 years of slavery, 200 years of maiming the locals, 200 years of killing, organized cleansing हुई हमारे minorities की, यहाँ majority को divide कर दिया गया. So after 200 years of such depredation and horrific rule, they expect us to celebrate their leftovers. For instance, the bridges they've left, for instance the railways they've left. और रेलवेज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो आपने भी बताया कि द एंटायर स्ट्रक्चर आज आपके पाकिस्तानी भी जो है, इंडियंस भी जो है, बहुत उसको सेलिब्रेट करते हैं कि ये तो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे. द एम्पायर वाज सो ग्रेट कि उन्होंने रेलवेज बनाई हमारे लिए, उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए. द प्रॉब्लम वाज कि railways was built as a private enterprise, was paid by the local taxpayers, and all of the profits were promised to the investors by the UK. ठीक है. अब उनकी इन्वेस्टमेंट क्या थी इसके अंदर? आपको पता है कि तमाम जो ट्रैक्स हैं, ठीक है, वो मेरे और आपके लिए नहीं थे, जो सब कॉन्टिनेंट के जो हमारी पास्ट जनरेशन थी, वो उन लोगों के लिए थे. So all of these tracks were established जो center of the India से लेके ports तक जाए. Because they had to loot the local treasure, they had to loot local tiles, और उन्होंने सारे again जैसे हमने बताया कि raw materials उन्होंने contribute करने थे towards their industrialization. तो वो सारे raw materials उन्होंने उस train के track के through ports तक लेके जाने थे, and then those. So again, यहाँ पे हमें उनकी selfish mentality. So nothing to celebrate, nothing to celebrate, and nothing to be sad about. In fact, nothing to be grateful for. Nothing to be grateful. Again, एक और चीज है. Again जो famine के अंदर कहा था, और उन्होंने again history की books में बताता है कि there were some good people of virtue जिन्होंने again Britishers themselves जिन्होंने लिखा to the then Prime Minister, again Winston Churchill को लिखा during the Bengal famine कि people are dying of hunger. And in a very famous line in its letter, Churchill wrote to them that अगर famine से लोग मर रहे हैं तो why hasn't Gandhi died yet? Because अगर गांधी भी तो भूख हड़ताल पे रहते थे, तो वो कहते थे कि why hasn't Gandhi died yet, quote unquote, कि तो अगर famine से लोग मर रहे हैं, because he was in disbelief. Again, the entire जो monarchy थी और जो UK का या British Empire था, it was always built on self-sustaining itself and based on depredations from the UK, because again from the Indians, because again puri subcontinent, again all the other colonies supplied their raw materials for the greatness of the empire. And the dilemma is that Britishers celebrated and awarded Winston Churchill with so many awards and so many acclamations कि भाई he was made a war hero after World War II. And this is what he did with the people in India, that he deprived them of their own food. Yeah. Snatched it away and gave it to his people, killing 4 million people in Bengal, and he was made a hero out of it. He was made a hero out of it. एक और चीज है. Again,
आजकल people say कि when the queen took the reins 35 colonies थी उसके under, the countries were her under. Now it's 15 and the queen has oversawn many countries getting out of her reign, and which is a good thing because again queen is और बल्कि कुछ जो अगेन बीबीसी के कमेंटेटर्स हैं, जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं, वो कहते हैं the queen has contributed a lot to the African countries in terms of aid, in terms of her own contribution as a human rights advocate, या उसने जो aid की contributions दी हैं. Again 200 years of torture, 200 years and 300 centuries of killings. Africans के साथ what they did was they enslaved the Africans. उन्होंने Africans को slaves बनाया और slave trade, slavery used they used to sell slaves. And I was reading this one day, the other day, कि जो UK का जो official bank है, जो central bank है, जी आपको पता है. अच्छा, एक और चीज है, पहले ये खुद ही villains बनते हैं, and when they change they expect us to become, appreciate them as their heroes. जो यूके का जो सेंट्रल बैंक है, देयर वाज अ टाइम, आयशा, जब स्लेव्स वर यूज्ड एज प्लेज. तो जैसे आजकल हम बैंक्स के अंदर जाते हैं, फॉर इंस्टेंस हमने लोन लेना है, तो हम लोग सोना रखवाते हैं, प्रॉपर्टी प्लेज करते हैं. इफ आई एम अनेबल टू पे, तो मैं सोना या प्लेज जो हमारी चीजें होती हैं वो बैंक जब्त कर लेता है. इसी तरह देयर वाज अ टाइम व्हेन स्लेव्स वर यूज्ड, ह्यूमन फ्लैश वाज यूज्ड एज a tool of pledge. So जब आप trade करते थे, because they consider their property as property, exactly. So they sold, maimed, killed, tortured Africans as their property. So they, again history. Again, the problem is that Queen Elizabeth represented this monarchy, and the monarchy continues to grow because again, King Charles. Exactly, and where are they getting all this money from? Because as far as we know, they don't have a source of income. ठीक है, आपको पता है कि right after and they have huge expenses. They have huge expenses right after Queen's death. एक और चीज सोशल मीडिया पे ट्रेंड की, वो है कोहिनूर. आपको पता है कि वो जो the huge this crown in the world, this crown that is going to be handed over to King Charles apparently, जो यूके के हैं, उस क्राउन के ऊपर जितने ज्यूल्स लगे हैं ना, वो सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं. वो जितने भी कॉलोनाइज्ड नेशंस रही हैं, जो फॉर्मर कॉमनवेल्थ कंट्रीज या जो करंट, वहां से हैं. और उसके अंदर सबसे बड़ा जो हीरा है, दैट इज कोहिनूर. That was taken from the subcontinent. Stolen from, not taken, Aisha, stolen from subcontinent. And it was given to the queen. और queen के अभी भी ताज के अंदर वो सबसे बड़ा हीरा जो है वो लगा हुआ है. It represents oppression. The queen's crown, the king's crown now, it represents oppression. It represents कि अगर जगह वो हीरा उतार दें. So it's a symbol of all that oppression and violence and they still own it because they wear it. They wear it and they flaunt it. देखिए, आजकल आपको पता है ह्यूमन राइट्स की बात होती है, तो साथ साथ एनिमल राइट्स की भी बात होती है. तो फैंसी बैग्स बनते हैं क्रोकोडाइल स्किन के वगैरह वगैरह. तो हम कहते हैं कि व्हाई डू यू, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने बड़ा महंगा से एक बैग लिया हुआ, इट इज बिल्ट बाय क्रोकोडाइल skin, तो people don't like it. People frown upon, because again I'm owning this brutality. The queen, if she's so nice, why don't she gives that stone back as a way of as a way of good gesture, or maybe a simple sorry. She hasn't said a simple sorry. Oh, we live in a big democratic world now. We talk about rights. Queen Elizabeth ka reign started in 1952. Yes. Even her father, who was the king in 1947, when Britishers left the subcontinent, even he didn't do anything. Now it's time for Charles to become the king, who has already become the king. And I don't think so it's ever going to happen. So what people really want, ये जो debate शुरू होगी Queen की डेथ के ऊपर कि ये हुआ था, वो हुआ था, people are showing disdain, I would say. They simply want sorry. उनको पैसा नहीं चाहिए, because obviously जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है, जिनकी जो जाने गई थी, the lost lives, they cannot be returned. ठीक है, उसकी कोई रेपरेशन हो ही नहीं सकती है. हाँ, ये कहा जाता है कि काफी ज्यादा जो रेपरेशंस हैं, अब
you would remember World War I के अंदर भी और World War II के अंदर भी I'm not that Germany. old, but you know, We have discussed and we have read history, and we know that in World War II, Germany had to pay huge reparations to Israel for following Treaty of Versailles. Exactly. So, and it was a huge amount. Yeah. And similarly, Italy paid to Libya, and even UK paid some amount to New Zealand. But nothing was paid to other African nations by the UK, which were its colonies. Nothing, like insignificant amount that does not even cover like 0.00% of our economy. You're right. But you know, a simple sorry. आपको एक चीज बताऊं कि a gesture also matters. A gesture. World War के बाद, you know, after Germany was divided into two, and then after reunification, former German chancellors and former German presidents have apologized publicly. So it was their ancestors. For instance, Hitler do not represent their current government. Your current government is not representative of Hitler's decisions or Hitler's choices, or even his party. But even today, they still feel sorrow. They express their regrets. They express their sorriness. And he seeks forgiveness. और वो जो martyrs का जो एक monuments बने हुए यूरोप के अंदर, वो मतलब there are scenes जहाँ वो they're kneeling down on the monuments and they're expressing their apologies. The problem is, why hasn't this attitude been from the Europeans? Again, Europeans have been apologizing to Europeans, but the Europeans have never apologized to the Africans or to the Asians. Because they still think of us as lesser human beings. As lesser humans. Again, आपको पता है कि जो colonialism खत्म हुई, तो post-colonialism या neo-colonialism आ गई, जहाँ they control world's trade with money and all. I mean, they stole all the money from these continents, and now they're the rich people. They are the rich people, yes. And now they tell us how to do things right. But अच्छा एक और चीज है, apart from depredations in Africa, killings, torture and genocides, एक बहुत बड़ी चीज है, the issue of Palestine. आपको पता है बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद पैलेस्टाइन को एक बिल्कुल एक the Britishers pledged कि जी हम Jews को एक homeland देंगे through Balfour Declaration. And Balfour Declaration was signed. It was primarily a letter that was signed in 1917 November के अंदर, after World War I. ठीक है, जब Ottomans वगैरह हारे थे, all the alliance lost the World War I to the Western Alliance. और उसके अंदर हुआ ये था कि the Ottomans had control over Palestine, and after the Ottomans lost, the Palestine went to the UK's control. और 1917 के अंदर तो तब क्वीन नहीं थी, but it was under the crown's permission के वो letter लिखा गया, and letter was named to Walter Rothschild. And Rothschild का हम सबको नाम याद है और रहेगा कि who controls the world and who controls global world's economy. तो Rothschild के नाम खत लिखा गया कि हम pledge करते हैं कि we'll settle you at the Palestine. और आपको पता है जब ये letter sign हुआ था, तब Palestine के अंदर Jews were only 10% of the population. Only 10% of the population, and 90% of the population were natives, which were Palestinians. और उन्होंने 1917 से 1947 तक जो यूके के जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाना शुरू कर दी इजराइल की. उन्होंने इजराइलीज को अगेन ज़ायनिस्ट को उन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, इन टर्म्स ऑफ एमिनेशंस, इन टर्म्स ऑफ guerrilla warfare, सब ट्रेन करना शुरू कर दिया. इट वाज अंटिल अच्छा एक और टर्म है नकबा. सो नकबा कंसिडर किया जाता है एथनिक क्लेंजिंग को. 1947 के अंदर एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो गई, बिकॉज 1947 के अंदर यूके ने कहा कि अच्छा द मैटर वाज लेफ्ट टू यूनाइटेड नेशंस, कि यूनाइटेड नेशंस डिसाइड करेगी कि अब उनका मैटर कि पैलेस्टाइन को क्या होना चाहिए. लेकिन तब तक पैलेस्टाइन के अंदर से 7,20,000, सो 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो नेटिव्स थी, पैलेस्टीनियंस थे, उनमें से 7,20,000 को दे ड्रोव देम आउट. क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई उन्होंने, आर्म्ड किया उनको, गुरिल्ला वॉरफेयर ट्रेनिंग दी, और इन 30 सालों के अंदर उन्होंने 7,20,000 पैलेस्टीनियंस को डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम द मेनलैंड. और जब 1947 में यूनाइटेड नेशंस के पास मामला गया, तो उस टाइम
उस टाइम पे उनके पास फोर्सेस थी, उनके पास इंस्टीट्यूशन थी, उनके पास लैंड था, और उन्होंने नेटिव्स को ड्राइव आउट कर दिया हुआ था. Will the UK or has the Queen ever apologized to the local Palestinians, the natives who were driven out? और ये मॉडर्न वर्ल्ड की बात करूं मैं, ये मैं आपको 19th सेंचुरी की बात नहीं कर रहा. दिस हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन के बाद आप देखें, they fought against the Hitlers, they fought against the most brutal forces, and they did exactly the same thing that they were fighting against. The Jews are the elitists, the Jews are the superior, and they drove out the natives, the Palestinians, and today still, abhi aapko recently, in the recent past, kal parson, the Palestinians are being killed again. The Israelis, the Zionist regime is attacking Syria, is attacking Palestine, is attacking the West Bank, and the brutalities are continuing. So why should we be sad about the monarch? We shouldn't be. Who sponsored the entire genocide? Even in today's world, her hand was still. अच्छा, आपको पता है, the Queen never came to Palestine or Israel. She never. प्रिंस विलियम्स आए हुए हैं, द किंग फिलिप जो क्वीन के हस्बैंड होते थे, वो आए हैं, बट द क्वीन herself never came to the land. But she sponsored, she oversaw the entire invasion, entire genocide, the entire colonization that Israel did in Palestine. जो था, और Jews को उन्होंने कंट्रोल दे दिया over the natives. And what is this? Should we celebrate this? Again, subcontinent se to we drove them out now. It's nothing new. This is something that they have been doing in the past, and they encourage the Israelis to do the same. Subcontinent se to we drove them out, because again आपको पता है कि जब 1947 के अंदर 45 के अंदर जब World War II end हुई थी, तो एक मार्शल प्लान था US का, because entire Europe was destroyed. तो यूएस के मार्शल प्लान ने रीबिल्डिंग करनी थी यूरोप के अंदर, तो उसकी एक कुछ शराइत थी, बिकॉज अगेन यूएस नेवर गिव्स यू एड और मनी विदाउट स्ट्रिंग्स. तो स्ट्रिंग्स थी कि आप कॉलोनाइजेशन को एंड करें. ठीक है, एंड यू नो लोकल रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग थी कि ब्रिटिश हैड नो यूज ऑफ स्टेइंग इन इंडिया, बिकॉज डेप्रेडेशन हो चुकी हुई थी, सारा सोना सारा ले गए थे, लोकल रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा थी, यू नो इट वाज nearly out of control. So the Britishers had to flee from the subcontinent or the African colonies. So they were actually pushed out of these colonies. They didn't leave voluntarily. If they had the chance, उनको अगर चॉइस होती तो they would have drained every single last penny from these lands. चॉइस होती तो आज भी क्वीन एलिजाबेथ जो थी ना, वो पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश जो सबकॉन्टिनेंट है उसकी रूलर होती. यहाँ लॉर्ड क्लाइव जैसे, जो कि अगेन क्लाइव ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता था, यहाँ कोई माउंटबेटन होता हमें चला रहा होता. अच्छा, इवन हम लोगों ने पार्टीशन की भी बात की. पार्टीशन के टाइम पे ब्रिटिशर्स लेफ्ट एंड देन दे I mean, they were forced to leave, obviously. But एक responsibility इनको दी गई थी, that was partition of India and Pakistan. Radcliffe line, and yes. What did they do? They messed up the entire thing. जो आपका Radcliffe का plan था, जिसके ऊपर उन्होंने सारा उसको किया था. What was that? I mean, 10 million people, over 10 million people were displaced from theirs. 1 million people were killed, or you can say died during the violence that happened because of the. It is underestimation, exactly. So, or Kashmir ka issue, you know, it's still going on. It has not resolved so far, or we never know whether it will or not. So, all of these problems, वो जाते जाते भी उन्होंने कहा कि हम इनको सुकून से नहीं जीने देंगे, हम इनके लिए ऐसा मसाइल पैदा करके जाएंगे कि इन लोगों को सालों हजारों तो नहीं यार, सैकड़ों साल लग जाएंगे उसको सॉल्व करते करते. बिकॉज वी जस्ट सेलिब्रेटेड 75th एनिवर्सरी ऑफ ब्रिटिशर्स लीविंग आवर लैंड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, एंड हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वी आर नोवेयर नियर अ सक्सेसफुल इकोनॉमी. एंड कश्मीर का जो इशू है वो कहीं भी सॉल्व होता नजर नहीं होता. Kashmir's issue open. So you know जानबूझ के ताकि इंडिया और पाकिस्तान continue to fight मसरूफ रहे, और because they see that these lands have the potential to grow. So ताकि अगर वो इन issues में ही फंसे रहेंगे तो they won't be able to move on. It is another problem. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, उनके अपने जो यूनाइटेड किंगडम है, it's no more यूनाइटेड किंगडम, because again स्कॉटलैंड आपको अलहदा होना चाहता है. ठीक है, उसके बाद आप इनफैक्ट द वर्ल्ड डजंट लाइक यू एनीमोर. स्कॉटलैंड तो आई मीन काफी अरसे से हमसे सेपरेट होना चाह रहा है. यूनाइटेड किंगडम बिकॉज़ ऑफ स्कॉटलैंड and Ireland and Scottish, your own people don't want to be ruled under the crown.
So they don't want nobody big likes yeah. the crown even today, because again the countries which have this crown as their head of the state are still vanquishing the crown, because again they don't like the queen. Because queen represents the monarchy, and the monarchy has had horrors over the years, over killed people, the entire looted continents. people. Yes, so we can't celebrate, and we're indifferent, because again we had no feelings, and even if we had some kind of feelings, it's going to be hatred, disdain, and a lot of hate, because again, we don't see any regrets or वो क्या कहते हैं उसको कि कोई शो हो कि उनको अफसोस था whatever happened. Yes. You know, ठीक है आपने नहीं किया, आपके बाबा अजदाद ने किया, your family did, your blood did this. Yeah. So have, you know, a little sense of responsibility, because that counts on you. And when you exploit those things, जो आप exploit करते हो, जो आपको विरासत में चीज मिली है, so you enjoy all the good things that you got out of it, all the money you got out of it, all the land, all the people you got to rule. आपको अभी भी उनका head of state बनने के वो enjoy करना है, but you are not ready to take responsibilities of the atrocities that were done by them. Ayesha, even today, you know, tourism and you know is one of the largest economy for the UK. और उसके अंदर all these big establishments, all these palaces which are tourist attraction, all these historic institutions which were built are built with the money stolen, with the treasure stolen from these former colonies, Africa, Asia, New Zealand. I mean, the problem is even today you are reaping the benefits of the colonization. Even today, the queen that who wears the jewel, wears the crown stolen from former colonies. The queen lives in these fancy, magnanimous palaces, again built on the blood and money of these former colonies. Run on the money that they took from us. Exactly. So the problem is, why should we be part of the mourning that has been going on? And you know, for those political, जो लोग politically correct होना चाहते हैं, जो अपनी ट्विटर फीड को जरा फ्लावरी करना चाहते हैं, because या तो वो यूके के graduates हैं, either they're American graduates, and they somehow feel that they should be again liberal भी हो सकते हैं, again बहुत से liberal class where they want to feel connected to these Western masters. The problem is, let's not be politically correct here. The problem is, let's realize the importance, and if we're not going to start a debate anytime soon, the problem is we're continuing to be modern slaves of this modern monarchy, because again we're calling him king per se, Ayesha. Oh, congratulations, King Charles. The problem is we're accepting that he's the king, accepting, oh, the queen has died, and it's a big word. We don't understand. Crowned for the current colonies, the crown for the current UK. But again, we are calling him the king. We are calling him the queen. And it has greater meaning in our lives as well. Oh, the king. For instance, King Charles हमारे Pakistan में आते हैं, तो oh, the king is here. The king is there. We'll praise him like the one. And hence, there's mental slavery. वो कहते हैं ना कि ज़हनों की जो गुलामी है, उससे निकलने, because that is something इतनी आसानी से नहीं हो सकता, but we can at least speak about what wrongs have been done. And this conversation was very important, because again social media पे जब लोग कहते हैं कि क्यों हम hate फैलाएं, let's be part of the mourning, because again दुश्मन भी हो तो उसके गम में होना चाहिए. The problem is reality के साथ टच रहना चाहिए. हमें देखना चाहिए कि अफ्रीकन्स क्या सोच रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट में पास्ट में क्या हुआ, कौन से हम हीरोज को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने इन्हीं आपके मोनार्क्स के खिलाफ rebel किया, and they were killed and they were hanged to death. So let's not forget our history, because again, if you don't know where you've come from, you'll never celebrate where you're currently today. So on that note, let's celebrate our freedom, and let's not be politically correct when it comes to history. Mentally free ourselves from the colonization. Because ये भी जो हमने podcast किया है, आधे से ज़्यादा I feel like हमने English में बात की है, and what is that? That is result of the colonization of more than half of the world, and it has become a global language. That is. And we have given them that power. And चलो अब तो बन गया, we're speaking English, but this How about use their language against them?
use I their think language against them. let's Yes, true. use our colonial tools to disempower them and empower ourselves. So till our next episode, we'll take इजाजत लेते हैं, लेकिन ये conversation होना बड़ी important थी because again maybe you people need to think about it as well. You people need to reconsider because हर किसी के पास partition की stories होंगी, उनके दादा दादी नाना नानी सुना होगा. You would have friends जिनसे आपने सुना होगा. You would have African friends जिनसे सुना होगा. So understand the slavery, the ethnic, religious violence that they created, the Amritsar incident, Jallianwala Bagh massacre that they were responsible for, one of the biggest protesting massacre that till date. Estimatedly 3,000 people were killed in Jallianwala Bagh. Within 10 minutes. Yes. It didn't take much time, so they opened fire. So these are some of the things that we need to reconsider. The protests that happened Britishers के against the colonizers, और उन्होंने हजारों की तादाद में लोगों की जान ली. So this is something, this discussion was just to spark a debate in the young minds so that, you know, they understand. Because again, we don't know our past. We don't know our history. So, you know, it was a brief So they research, discourse. They get to know their history, better understand your history, and so you're well informed, and, you know, so that we can move on and live a life where our minds are not colonized anymore. And we're free. And we don't praise the Britishers so much. Yeah, so इसी नोट पे हम इजाजत लेते हैं. अगले सेशन पे we'll try कि किसी हम celebrity को engage कर सकें. But मैं और आयशा तो conversation करते रहेंगे, and this is going to be our fruitful conversation जहां हम उन topics से बात करते रहेंगे जो mainstream media बात नहीं करता. Mainstream media बात नहीं करता. Okay, Allah Hafiz.